Assalamu alaikum. I am Aqsa Kashif and we are going to discuss about SVM. In this presentation we will discuss about its introduction and basic overview. In basic overview we will discuss how we draw single hyperplane, and in some cases we have to deal with nonlinear transformation, and after this we will find its solution by using kernel trick, and then we will see about its formulas. Sport vector machine is a supervised machine learning algorithm used for classification and regression problems. It is introduced by Vladimir Vampic and Alexei Jarvonenix in 1960s. Known for its effectiveness in high-dimensional spaces, it finds an optimal hyperplane that best separates the data into classes. It is used in areas such as image recognition, bioinformatics, and text categorization. Now we have hyperplane. A hyperplane that separates data point into classes. When we talk about hyperplane, I want to clear a confusion. When we are in 1D, we consider a point as a hyperplane, but when we are in 2D, a single line is called as hyperplane, but in 3D, a traditional plane is called a hyperplane. Now, sport vectors. Sport vectors, these are the data points closest to the hyperplane, as we can see it in the figure. Margin, the distance between the hyperplane and the nearest sport vectors on either side. A large margin implies better generalization ability of the classifier. Now we discuss about the goal of SVM. So we find a hyperplane by maximizing the margin so that we can correctly classify the data. Here we will discuss about the comparison between linear separable data and non-linear separable data. Simply, linear separable data which can be separated by single hyperplane, but in complex problems we have to deal with the non-linear separable data. So we are discussing about SVM. So in SVM we will get a solution that helps us to solve the non-linear separable data by using the kernel trick. हमारे पास ये एक इजी से एग्जांपल है. आइए हम इसकी मदद से एसवीएम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. तो ये जो 1D हमारे पास डाटा है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं, दूसरी तरफ पिंक बॉल्स हैं. तो इस तरह के डाटे को हमने इजीली एक सिंगल हाइपरप्लेन से सेपरेटेबल कर लिया. लेकिन हमारे पास हमेशा सिंपल एग्जांपल नहीं हुई ना. तो जैसे कि अभी आपके पास एक और एग्जांपल है कि 1 डायमेंशन हमारे पास डाटा है यहाँ पे. तो इसके लिए हमें एक ऐसा फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो इसके y कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दे. तो जैसे ये y कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा जो हमने फार्मूला इस पर अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज पॉइंट्स अलग हो गए और ब्लू पॉइंट्स अलग हो गए. अब हम इस डाटे को देख के इजीली हाइपरप्लेन जो है वो ड्रा कर सकते हैं. लेकिन इस बात का हमने ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला हम अप्लाई करें कि अगर हम उसकी डायमेंशन रिड्यूस करते हैं, मतलब हम उसे टॉप व्यू से देखते हैं, तो हमारा जैसा डाटा ओरिजिनल था वो वैसा ही रहना चाहिए. तो अब अगर हमारे पास एक नया डाटा आता है, तो हमारा ये जो मशीन लर्निंग का मॉडल है ये क्या करेगा, सेम उसके साथ सलूक करेगा कि सबसे पहले उसने 1D से 2D में कन्वर्ट किया, 2D में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमारे लिए ये डिसाइड किया कि ये ब्लू क्लास का जो नया पॉइंट है वो ब्लू क्लास का पॉइंट है या ऑरेंज क्लास का पॉइंट है. तो अब हमने क्योंकि अंडरस्टैंड कर लिया है कि 1D से 2D में हमने SVM को कैसे यूज़ करना है, अब हम एक और कम्प्लेक्स एग्जांपल लेके SVM की
इस कर्नल ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हमने एक कम्प्लेक्स एग्जाम्पल ली, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। अब ये 2D एग्जाम्पल है, तो जाहिर सी बात है हम इसे 3D में कन्वर्ट करेंगे और फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो अब हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है ना, उस बात का हमने ये ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे कोड में भी देख सकते हैं कि हमने x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट को हमने सेम रखा है, लेकिन जब हमने z कोऑर्डिनेट लिया है उस पर हमने फार्मूला अप्लाई किया है, और वो फार्मूला जो है वो पैराबोलॉइड का है। तो जब हमने इस तरह नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तो हमारे जो डाटे की शक्ल है वो कुछ इस तरह हो गई। ये देखें, ये ब्लू पॉइंट्स जो है वो ऊपर के आ गए और पिंक पॉइंट्स जो है वो नीचे रह गए। तो इस तरह बड़े आराम से हमने यहाँ पे हाइपर प्लेन जो है वो ड्रा कर दी। तो अगर हमारे पास कोई और टेस्ट डाटा भी आता है तो उसके साथ भी ये सेम बिहेव करेगा, 2D से 3D में कन्वर्ट करेगा और हमारा जो मॉडल है इसके लिए क्लास डिसाइड कर देगा। First of all, I'm thankful for your pretty intention in my previous slides. So we have understand the kernel tricks, but there are some common kernel tricks that can be used in our different problems. That is linear, polynomial, RBF, and Sigmoid. Here we can see the plotting of different kernel tricks. These are the formulas we can use according to different kernel type. Thank you for listening. I hope you understand well. Please subscribe my channel, and for my motivation, please like this video and share it with your friends. Thank you.